Students, in previous video we have discussed about the role and responsibilities and functionalities of NABARD as an apex body which regulates all the financial institutions which provides rural credit or agricultural credit. Now in today's video we will discuss about the deficiencies of rural credit system. As we know that to get a credit from bank we need to have something with us to give as a collateral. And if you are not having to give as a collateral, you won't be able to get credits from the bank. So the farmers who are not having the sufficient resources to give as a collateral to the banks, it was not possible for them to get credit whenever they need. So this was a deficiency of rural credit system. And the political intervention in country like India, it was difficult for the institutions which provide rural credit to recollect the loans or the credits which they had dispersed in the market. Sometimes it was very difficult for them to recollect that credit amount from the farmers, because sometimes it was seen that just because of a bad crop season, the farmers were not in condition to repay whatever the loan they had taken from the banks. So this was also a deficiency of rural credit system. And lastly, most of the financial institutions of commercial banks failed to develop a culture which promotes the farmers to save for the future. Actually, the condition was quite different. As a country like India, most of the farmers produce that much quantity which is sufficient for them to sustain a year. Sustainable farming means whatever the produce they are having is enough to sustain for the whole year, and they do not have enough to reinvest in farming or to save for the next cropping season. And in this regard, even the commercial banks failed to encourage the rural agriculturalists or farmers to develop the habit of saving for future. This is also a deficiency in this regard. Impact of debt on farmers has started increasing tremendously and put an immense pressure on the farmers and compelled them to suicide. Large number of cases started increasing, and these cases can be seen in large numbers in states like Maharashtra and Andhra Pradesh. Farmers were not having enough to repay whatever the loans they have taken from commercial banks, and just because of the pressure from the commercial banks to repay the amount, they consequenced into suicide. So this was a complete failure of social banking concept. But after the reforms of 1991, the condition has started recovering from this kind of adversities. Now the second topic of today's video is the challenge of agricultural marketing. The challenges of
agricultural marketing, or you can say rural marketing. So after harvesting, the farmers needs to collect or assemble their produce in the field or in the farm, and later they have to process their harvest, package it and grade it according to the quality, and store it in the godowns and brought to the market for sale. So combining all these processes, which starts from harvesting of the produce to ultimately sale in the market, is known as rural marketing. So agriculture marketing or rural marketing includes all those processes between harvesting and final sale of the produce of the farmer in the market, is termed as rural marketing or agricultural marketing. And broadly, this concept of rural marketing or agricultural marketing includes gathering of produce after harvesting and processing the produce according to the quality of grains, and again packaging of separated, and again packaging of the separated grains or the produce according to the quality, and storing the produce for future sale, selling the produce when the price is lucrative. So agricultural marketing may be defined as the process that involves gathering of produce after harvesting, processing the produce like separating the straw from the grains, and grading the produce according to the quality, and packaging the produce according to the buyer's preference, and storing the produce for future sale, and selling the produce when the price is lucrative. So these are the processes which are involved in agricultural marketing. So at the time of independence, the whole agricultural marketing was under the control of moneylanders, traders and commission agents, because जो भी फार्मर्स या जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, वो इन मनी लैंडर से, ट्रेडर्स से या कमीशन एजेंट से क्रेडिट्स लेते थे, और वो उतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे जिसको अगर वो सेल कर सके या अपने लाइफ को लीड कर सके। उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती थी कि अपने प्रोड्यूस को होल्ड करके रख सके, और जब एक ल्यूक्रेटिव प्राइस उनको मार्केट से मिलने लगे तब वो उस प्रोड्यूस को सेल आउट करें। मजबूरन उन्हें उन्हीं मनी लैंडर्स को उनके द्वारा फिक्स किए गए प्राइसेस पे अपने प्रोड्यूस को बेचना पड़ता था। तो जो भी फार्मर्स थे उनको बहुत ज्यादा घाटा होता था, जो भी उनका कॉस्ट इंकर्ड होता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में, वो उसको भी बेच के नहीं प्राप्त कर पाते। दिस वॉज अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर फार्मर्स, और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन उनको सुसाइड करने पे मजबूर करती थी। सो हियर डिस्ट्रेस सेल्स रेफर टू सिचुएशन when the farmers are compelled to sell their produce immediately after the harvest, no matter how the market price is. Distress sell वो सेल्स की एक प्रक्रिया होती है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, जिसमें कि फार्मर्स को ये कंपेल किया जाता है कि जैसे ही वो हार्वेस्ट करें अपने प्रोड्यूस का, तुरंत ही उसे मार्केट में सेल कर दे, वो भी तब जब मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोड्यूस का या उस ग्रेन का प्राइस बहुत कम हो, यानी कि उनके लागत से भी कम हो। इसको हम डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। और ये डिस्ट्रेस सेल करने पर मजबूर क्यों होते थे? क्योंकि वो मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स से लोन लिए होते थे, क्रेडिट्स लिए होते थे, और उसको वो समय से चुका नहीं पाते थे, तो मजबूरन उन्हीं को अपने प्रोड्यूस को सेल करना पड़ता था। और वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि फार्मर्स को तुरंत रेडी कैश चाहिए होता था, जिससे कि उनके ऊपर जो बर्डन था क्रेडिट्स का, उसको वो चुका सके
और फर्दर जो है अगले क्रॉपिंग सीजन के लिए कुछ पैसे रेज कर सकें अपने प्रोड्यूस को बेच के। And now we will study the different measures initiated by the government to improve marketing system. So under this, we will study about regulated markets, cooperative agricultural marketing societies, and provision of warehousing facilities, subsidized transport, dissemination of information, and MSP policies. So one by one, we will try to elaborate these points. सो एग्रीकल्चरल प्रोसेस में जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी, खास करके रूरल क्रेडिट को लेके, उन सबको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए। जो भी कमीशन एजेंट्स थे या ट्रेडर्स का, मनी लैंडर्स का जो कंट्रोल था मार्केट में, उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए। उन्हीं इनिशिएटिव्स में रेगुलेटेड मार्केट का एस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता था कि कुछ कमिटीज होती थी जिसमें कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे और ट्रेडर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। तो जो भी फार्मर का प्रोड्यूस था उसका सेल और परचेज इन्हीं की देख रेख में होता था और पूरे के पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया गया और स्केल्स और वेइंग सिस्टम को बहुत ही एफिशिएंट बनाया गया और एक्यूरेट बनाया गया, एरर फ्री बनाया गया। और ये जो भी कमेटी थी वो ये इस बात को एंश्योर करती थी कि जो भी फार्मर्स हैं उनके प्रोड्यूस का उन्हें एक सही प्राइस मिल सके, यानी कि जो भी उनकी लागत है उससे कम मूल्य उनको न मिले। तो फार्मर्स कहीं ना कहीं इनकरेज हुए अपने प्रोड्यूस को डायरेक्टली मार्केट में ले आके बेचने के, और किसकी देखरेख में? इन कमेटीज के देखरेख में। So students, this is for today, and the remaining portion we will try to cover in our next video. Till then, have a good day.